પોરબંદર ને હરિયાળું સ્વચ્છ અને પર્યાવરણ મૈત્રી બનાવવાના સંકલ્પ સાથે ગ્રીન પોરબંદર દ્વારા ફરી એકવાર 1000 વૃક્ષોના વાવેતર અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। પોરબંદર નજીક કુચડી ગામ પાસે આવેલ મરીન ટાસ્ક ફોર્સ પોરબંદરના પટાંગણમાં ગ્રીન પોરબંદર અને સદગાંવના વૃદ્ધાશ્રમના સંયુક્ત સહયોગથી વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। कार्यक्रम दरमियान कलेक्टर एस.डी. धानाणी तथा ग्रीन पोरबंदरना संस्थापक रामदेवभाई मोढवाडिया द्वारा ग्रीन पोरबंदर अंतर्गत अत्यार सुधी करवामां आवेल विविध हरियाળી प्रवृत्ति अंगे माहिती आपवामां आवी। साथे ज पोरबंदरनी जनताने वधुमां वधु वृक्ष वावी पर्यावरणना जतनमा सहभागी बनवा अने पोरबंदरने हरियाळुं तथा स्वच्छ बनावવાની अपील करवामां आवी। आ प्रसंगे उपस्थित सौए आगामी समयमां पण वधुमां वधु वृक्ष वावी पर्यावरण प्रत्ये पोतानी जवाबदारी निभावવાનો संकल्प लीधो। ग्रीन पोरबंदर द्वारा करवामां आवी रहेल आ हरियाળી पहल पोरबंदरना पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता अने हरियाळीकरणनी दिशामां महत्वपूर्ण पगलुं बनी रह्युं छे। रिपोर्टर गौतमभाई मजीठिया, आजाद मीडिया लाइव, पोरबंदर। पोरबंदर जिल्लाना कुचड़ी गामे मरीन सेक्टर कमांडरनी कचेरीना पटांगणमां आजे मरीन कमांडो अने तेमनी साथे ग्रीन पोरबंदर, सद्भावना ट्रस्ट वगैरह संस्थाना सहयोगथी अने पदाधिकारीनी हाजरीमां आजे वृक्षारोपण करवामां आव्युं छे। खूब ज सुंदर कार्य छे। पोरबंदर जिल्लाने पर्यावरण अने जल बंनेनी खूब ज जरूरियात रहेली छे। आ प्रसंगे वधुने वधु लोको वृक्षो वावता थाय अने वृक्षो थकी पर्यावरणનું અને આ પૃથ્વીનું જતન કરે એવી સૌને હું અપીલ કરું છું। ફરીથી મરીન કમાન્ડો, ગ્રીન પોરબંદર અને સદ્ભાવના ટ્રસ્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન।